So now we shall be dealing with the historical background कि यूरोप में, अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप और बाकी ऐसी कंट्रीज़ में ये मूवमेंट तो चली कि इंफॉर्मेशन लॉ बनाया जाए। हिंदुस्तान में इस मामले में कब मूवमेंट बिगिन हुई और किस कदर ये मैकेनिज्म डेवलप हो गया और रुझान पैदा हो गया अवाम में कि नहीं, जो गवर्नमेंट है दे आर नॉट डूइंग अ फेवर ऑन अस by providing us the good services and by providing us a certain level of administration. It is their duty, and not only their duty to basically do good for the welfare of the people, but they're also supposed to be answerable and accountable. दरअसल हुआ ये था कि राजस्थान का एक तहसील था छोटा सा, बीम तहसील। बीम तहसील में मामला ये हुआ कि कुछ लोग जो है एक फेमाइन रिलीफ वर्क के दौरान सरकारी दफ्तर से ये मालूम हुआ, यानी कहत के बाद कुछ काम हुआ, कहत साली के बाद कुछ काम हुआ और सरकार ने ये दिखाया, लोकल गवर्नमेंट ने, पंचायत का भी इन्वॉल्वमेंट था क्योंकि पंचायत आर द यूनिट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, ये दिखाया गया कि काम हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स हुआ है, पंचायत घर हुआ है, वेल्स ट्यूबवेल्स बने हैं, बंड बने हैं और बहुत बड़ा मास्टर रोल यानी वो वाला दस्तावेज जिसमें मजदूरों की जो है वो डिटेल्स होती है कि इन लोगों ने काम किया था और इनको मुआवजा और वेजेस भी मिले और ये सारा काम हुआ है। जबकि उस बीम तहसील के लोगों को ये पता थी कि द वर्क दैट वाज सपोज्ड टू हैव बीन डन, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इट वाज अ वर्क ऑन द पेपर्स ओनली। और जो मास्टर रोल्स में नाम दिए थे दे वर बोगस बेनिफिशियरीज, दे वर घोस्ट बेनिफिशियरीज, इस नाम के कोई लोग एग्जिस्ट करते नहीं थे। सो इट वाज अ क्लियर केस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, इट वाज अ क्लियर केस ऑफ करप्शन इन विच बोथ पब्लिक अथॉरिटीज as well as the people from the panchayats were involved. So यहाँ मामला ये हुआ कि बीम तहसील के जो गांव थे उन गांव वालों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम पड़ा MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक लोकल लेवल पे एक एजिटेशन शुरू कर दी कि हमें डिटेल्स बताई जाए कि अगर मास्टर रोल्स में तुमने दिखाए हैं तो ये पैसा गया किधर, अगर कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो कहाँ गया, गिव अस द वोचर्स, बिल्स एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है सो दैट वी कैन स्क्रूटिनाइज देम। अब बुनियादी तौर पे MKSS की जो मूवमेंट है वो चली और जोर पकड़ती गई। इस मामले में लोकल लेवल पे उनको थोड़ी सी तो विक्ट्री मिली। एक अचीवमेंट MKSS की ये थी कि राजस्थान की असेंबली ने पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट की। पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट में ये अमेंडमेंट की कि आज के बाद जो भी पंचायत के अंदर काम होगा उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर चाहे वो इक्विपमेंट प्रोक्योर किए गए या कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया या खर्चा किया गया, सरकारी पैसा खर्च किया गया, तो उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक बोर्ड्स पे होनी चाहिए, वो नगर नगर चिपकानी है और न्यूज़पेपर्स में देनी है ताकि सबको पता चले कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है। लेकिन याद रख लीजिए दिस वाज लिमिटेड to the activities which are supposed to be done by the panchayats only. It was not a legislation which covered each and every aspect of the governance, each and every unit of the governance. लिहाजा MKSS की जो जद्दोजहद है वो जारी रही और देखते ही देखते MKSS ये एजुकेशन शुरू हो गई थी 1990 में और 1996 के करीब MKSS जो है वो एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में अपना काम फैलाती गई और अवेयरनेस क्रिएट करती गई। विद द रिजल्ट MKSS ने जो शेप ली दैट वाज NCPRI, इट इवेंचुअली turned into an organization called National Campaign for People's Right to Information. Now this is where I say that this particular topic becomes important for the paper 1 of the UPSC also, where you are supposed to deal with various social and political movements that took place in the post-independent era and the role played by the NGOs and the civil society groups. This is where this particular movement becomes important for the paper 1 also. So the National Campaign for People's Right
right to information. There are people who are very famous who were associated with this movement. For example, Nikhil Dey, who is still working on this, or for example, the Aruna Roy. These are the people who were behind NCPRI, quite vocal and instrumental. अब मामला ये हुआ कि मजदूर किसान शक्ति संगठन या NCPRI के नतीजे में राजस्थान ने तो चेंजेस लाई, लेकिन याद रख लीजिए कि फुल फ्लेज्ड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या इंफॉर्मेशन लॉ आया सबसे पहली बार तमिलनाडु में. Tamil Nadu in 1997 became the first state to bring a legislation on information and people's right to information. So the movement was actually started by Rajasthan. But Rajasthan did not bring a legislation called right to information or an information law. It only made changes in the Panchayati Raj Act in order to basically give this kind of account, in order to ensure accountability in the works done by the panchayats. It was Tamil Nadu which for the first time made a legislation on information or people's right to information, followed by Goa. Goa also did it in 1997, and much later Rajasthan brought an information legislation. Now this was something happening at the state level. What was happening at the national level? At the national level there was a constant effort on the part of the civil society, on the part of various other organizations, in particular the media houses, because a media house is supposed to basically work on the stories which most of the times is supposed to be based on the information that is lying with the government offices. So this information that is lying with the government offices will not see the light of the day because of the colonial remnants and the colonial features unless and until a public official is obliged to divulge this information to the people, otherwise he would not do it. अब इसलिए नेशनल लेवल पे भी एक मूवमेंट शुरू हो गई और यहाँ पे HDS शूरी कमेटी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, शूरी कमेटी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस तरीके की रिकमेंडेशंस दी थी कि नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट को एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई लॉ लाने की जरूरत है. विद द रिजल्ट इवेंचुअली द गवर्नमेंट वाज बेसिकली फोर्स्ड, and in 2002 a legislation was brought in the parliament. In fact, it was also passed by both the houses of the parliament, but this legislation was extremely weak and feeble, so it did not come into effect. In 2004 eventually R.T.I bill was introduced in the parliament and it got the assent of the president in 2005. That is, in 2005 we had an act called Right to Information Act, that is during the first UPA era under the prime ministership of Manmohan Singh. This is how the legislation came in India. Now, much before this R.T.I legislation was basically enacted by the parliament, there were certain judgments and the observations made by the Supreme Court and various high courts which basically impressed upon the government of India and the governments of various states to have a legislation of the type of right to information. It was in 1997, that is much before this legislation was passed by the parliament, Supreme Court in the Indian Express case, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस केस में इस बात का इजहार किया था कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, दैट इज आर्टिकल 21 एंड ओवर एनकम्पासिंग आर्टिकल, कहा आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है राइट टू नो. A person, particularly a citizen, has a right to know about the government activities. That is, Article 21 also includes right to know. Thereafter, Supreme Court in number of cases made such observations, and it also said that right to information is not only a part of Article 21, that is life with dignity, it is also a part of Article 19(1)(a), freedom of speech and expression. That is to say, a person is supposed to speak and express only when he has a certain level of information. That is, speech and expression also means right to acquire information and disseminate information. It is also, in one of the judgments, the Supreme Court said that R.T.I is at par with the right to vote. If you want to deal with a phenomenon called criminalization of politics,
if you do not want to vote for a candidate who has had rape charges against him, who has had the charges of assault against him, you need to know how many FIRs and how many charge sheets are against a candidate. When you have that level of information, then only you can be able to make a good decision whether I should vote for him or not. So RTI is at par with the right to vote unless and until you have information about the candidate and his background, you would not be able to make a good and reasonable choice. So the judiciary also had a role in this historical background in order to basically push the government of the country to bring a certain legislation. So that was the historical background in detail. Now we shall basically be dealing with something called the salient features of the Act. What does the preamble of the Act say? ये प्रियम्बल, ये इब्तिदारिया या पेश लफ्ज़ जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो क्या कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटो क्या है? बुनियादी तौर पे राइट टू इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव है एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। वो शहरी जिसके पास इंफॉर्मेशन हो। अगर 5 साल के बाद मैंने वोट दिया और वोट दिया, अपना ट्रस्ट पोज किया इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ये उस खर्चे से चलते हैं जो मैं टैक्स के तौर पे देता हूँ, लिहाजा दे विल हैव टू बी आंसरेबल। और आंसरेबल वो उसी सूरत में होंगे जब मेरे पास वो तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन होगी जो उनके पास है। इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी ये क्या इंश्योर कराएगी? जो सिटीजन इन्फॉर्म्ड होता है, जिस औरत को पता होती है कि देयर इज अ डाउरी, एंटी डाउरी एक्ट, जिस औरत को पता है देयर इज अ डोमेस्टिक वायलेंसेस एक्ट 2005, शी इज इन अ पोजीशन कि वो कोई भी जुल्म और एट्रोसिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस सिटीजन को पता है कि मेरे पास RTI का कानून है कि मैं ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ, उस सिटीजन को धोखा देना और उस सिटीजन के साथ जो है वो इनजस्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ही हैज अ सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। सो व्हाट वी रिक्वायर, व्हाट इज द preamble of the act? A citizen who is informed. And what will that ensure? Informed citizen will seek accountability. वो आंसर मांगेगा, आंसर शीट बोलो कट ऑफ हुआ क्या था, ये बोलो कि कितने फॉर्म्स अप्लाई हुए थे, फिर प्रीलिम्स से मेंस में कितने गए, मेंस से इंटरव्यू में कितने गए। अगर तुमने ये रिक्रूटमेंट किया, सरकारी दफ्तर ने कंप्यूटर खरीदे, कंप्यूटर के लिए ऑक्शन हुआ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हुआ, ये कौन सी कंपनी थी, यहाँ कोई ऑफिशियल का और मिनिस्टर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं था। लिहाजा इन्फॉर्म सिटीजनरी आपका जीना हराम कर सकती है करप्ट ऑफिशियल्स का। इससे क्या होगा? इससे आएगी ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग। ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग फिर से याद कीजिए रॉबर्ट क्लिटगार्ड को, मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन minus transparency and accountability leaves the room open for corruption. So transparency बुनियादी तौर पे उस मैकेनिज्म को कहते हैं, एक गवर्नेंस मॉडल को ट्रांसपेरेंट तभी कहा जाएगा जब इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन which has to do with the process of taking the decision, कि डिसीजन कैसे लिया गया और लिए हुए डिसीजन को इंप्लीमेंट कैसे किया गया, अगर ये इंफॉर्मेशन हत्तल इम्कान मुमकिन है कि ये सिटीजन के पास भी मौजूद है, कहा जाएगा कि ये वाला गवर्नेंस मॉडल जो है वो ट्रांसपेरेंट है। सो इन्फॉर्म सिटीजनरी, ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग, और ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग कैसे? अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये है पर्टिकुलर प्रियम्बल ऑफ दिस RTI एक्ट। ये बुनियादी मोटो है, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड व्हाट इज इट गोइंग टू अचीव? This is going to achieve something called corruption-free governance. It will allow us to check corruption, because when the government official is basically able to understand कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, they will see the light of the day. He won't be in a position कि वो कोई भी गड़बड़ करे। इसलिए ये है preamble of the act। ये बुनियादी तौर पे 1, 2, 3 and 4 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का preamble और इब्तिदाइया ये भी कहता है
कि ये मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई सिटीजन इंफॉर्मेशन मांगता है तो इस इंफॉर्मेशन मांगने के बाद ये भी मुमकिन है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो रुकना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज दिस एलिगेशन कि जेके बैंक की जो रिक्रूटमेंट थी, देयर इज सम काइंड ऑफ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, पीपल हु डिड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, दे वर सिटिंग इन द जेके बैंक ब्रांचेस विद द रिजल्ट जिन्होंने पिछला एग्जाम दिया वो एग्जाम भी कैंसिल हुआ। लिहाजा हुआ क्या, यानी गवर्नेंस जो है वो सफर कर गई। अब रिक्रूटमेंट जल्दी होता तो लोगों को नौकरी जल्दी मिलती, लेकिन चूंकि मसला आ गया करप्शन का, तो कोर्ट ने कल भी कहा कि अभी जो है वो फॉर्म लिया नहीं जाए, या पिछली बार जिन्होंने एग्जाम दिया उनका एग्जाम क्यों कैंसिल करवाया। सो बिकॉज ऑफ दिस disclosure of the information, there is a possibility that governance might suffer. Government might suffer temporarily, but in the long run this is beneficial. क्योंकि अगर ये करप्शन चलता रहा और आपने कहा कि करप्शन की वजह से, करप्शन को चेक करने की वजह से तुमने RTI भरा, RTI के बाद मामला जो मीडिया में आया, मीडिया के बाद जुडिशरी एक्टिवेट हो गई, तो हमारे जो रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को सफर करना पड़ा। इस मामले में RTI एक्ट कहता है कि वी नीड टू हार्मोनाइज दीज टू एक्सट्रीम्स, यानी जो गवर्नेंस का टेम्पररी एक नुकसान और हर्डल्स क्रिएट होते हैं बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ रेवलेशन एंड सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों इंटरेस्ट्स को हार्मोनाइज कीजिए और ये देखिए कि पब्लिक इंटरेस्ट किससे सर्व होता है। क्या पब्लिक इंटरेस्ट इस चीज से सर्व हुआ कि 4000 ने एग्जाम दिया था, इनको जल्दी एग्जाम देने दो, या पब्लिक इंटरेस्ट इससे सर्व होगा कि आज अगर ऐसा हुआ तो अगले साल भी ऐसी ही ओपेक नेचर की जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। लिहाजा पब्लिक इंटरेस्ट तय करना ये काम है गवर्नमेंट का, और हार्मोनाइज करने हैं दोनों एक्सट्रीम्स, देन दे विल हैव टू मेक अ डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गवर्नेंस। So that's it for the session. In the next session, we shall be dealing with the salient features. What is meant by information? What is the public authority? What are penalties? What are exemptions? That we are supposed to deal with in the next video. Till then, goodbye, good luck. Do not forget to subscribe, share this particular video. Thank you.